Hello, students. A very good morning to all of you. The Vardhaman School welcomes you all. I hope you are ill and healthy at your home and learning from there only. So, we are again back with another video from class 11th, chapter number 2, biological classification. So, previously we have seen the kingdom fungi. Now we are going to learn about the kingdom plantae and animalia. So, you also have chapter 3 and 4 as Kingdom Plantae and Kingdom Animalia. So, in this video, we are going to learn only the overview of Kingdom Plantae and Kingdom Animalia. So, let's get started. Kingdom and Plantae they are multicellular eukaryotes with cell walls mainly made up of cellulose. ठीक है, सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की बनी हुई होती है. दे आर ऑटोट्रॉप्स मीन्स दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ photosynthesis. The few members are partially heterotrophic such as insectivorous plants और parasites. कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो हीट्रोट्रॉफिक होते हैं मीन्स डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड. एग्जाम्पल्स हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एंड parasites. Bladderwort and Venus flytrap are examples of insectivorous plants and Cuscuta is the example of parasitic plant. Plantae includes plants के अंदर अलग अलग फाइलम्स होते हैं जैसे एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैव टू डिस्टिंक्ट फेजेस. दो डिस्टिंक्ट फेजेस होते हैं प्लांट्स की लाइफ साइकिल में, डिप्लोस्पोरोफाइटिक फेज एंड हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक फेज. डिप्लॉइड और हैप्लॉइड मैंने आपको समझाया है. हैप्लॉइड क्या होता है? when the number of chromosomes are n, then the cell is haploid, and when the number of chromosomes are 2n, then it is known as diploid. The length of the haploid and diploid phases and whether these phases are free living or dependent on others may vary among different groups in plants. This phenomenon is known as alternation of generation. किसी भी लाइफ साइकिल में अगर दो फेजेस होते हैं जिसमें एक होता है हैप्लॉइड और दूसरा होता है डिप्लॉइड और वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म या ग्रुप टू ग्रुप डिफर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन इन जनरेशन. Okay, now five classes are there like Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperms and Angiosperms. Okay, Thallophyta is undifferentiated body thallus means body is undifferentiated into thallus. No vascular system is there. No vascular system means no xylem and phloem is there. Reproduction is sexual and asexual. The examples are algae and lichens. Next is Bryophyta. Bryophyta means no proper root or shoot system is there. No vascular system is there and reproduction is again sexual and asexual. Examples are given mosses, liverwoods and hornwoods. Third one is Pteridophytas. Pteridophytas are differentiated into root and shoot system means they have root and shoot system. Also vascular system is present means xylem is present and phloem is present. Reproduction is again sexual and asexual. Example is ferns. All these are known as cryptogams. Cryptogams means the plants which are seedless, जिनके पास seed present नहीं होती, seed नहीं होती है. दूसरे होते हैं phanograms. Phanograms means in which they are seed bearing plants. Seeds are present. Gymnosperms, no flowers, naked seeds borne on scales of cones, therefore reproductive organs are in the form of cones. ठीक है, इसमें फ्लावर प्रेजेंट नहीं होते और सीड्स कैसी होती है? नेकेड सीड्स प्रेजेंट होती है. राइट, एग्जाम्पल्स आर एवरग्रीन एंड गायकेडा. एंजियोस्पर्म्स, they are flowering plants. Seeds are present and seeds are enclosed into fruits. Examples are monocotyledons and dicotyledons. Students, Kingdom Plantae again we are going to study in chapter number 3 in detail. Okay, so this video is only about the overview of Kingdom Plantae.
The next is kingdom Animalia. All the animals are included in kingdom Animalia. This includes all organisms which multicellular eukaryotes without cell walls, means cell wall is absent. You already know, you have studied in your previous classes that in animal cell wall is absent. They are heterotrophic organism, means they are dependent on others for their food. They digest their food in an internal cavity and store reserves as glycogen or fat. वो अपनी बॉडी अपने फूड को डाइजेस्ट करते हैं इन द इंटरनल कैविटी एंड स्टोर, उसको स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन को एज अ ग्लाइकोजन और फैट. Their mode of nutrition is holozoic, means by ingestion of food. Holozoic का मतलब होता है फूड को इनटेक करना. They follow a definite growth pattern and grow into adults that have definite shape and size. ठीक है, एक पर्टिकुलर पैटर्न में वो ग्रो होते हैं एंड it will be grow into a definite shape and size. Higher forms show elaborated sensory and neuromotor mechanism. Most of them are capable of locomotion. ठीक है, capable of locomotion means they are capable of movement. The sexual reproduction is by copulation of male and female followed by embryological development. Now in kingdom Animalia, certain classes are there, means level of organization is there, like phylum like Porifera, Salentrata, Ctenophora, then Platyhelminthes, Aschelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata and Chordata. These are all the phylums of animal kingdom which we are going to learn or study in detail in chapter number 4. Understand? The next is lichen, viruses and viroids. Lichens आपको पहले भी बताया, lichen is the symbiotic association between algae and fungi. Algae and fungi के बीच जो symbiotic relationship होता है उसको हम बोलते हैं lichen. Now first we are going to study about virus. What are viruses? Viruses are non-cellular organisms that are characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell. वायरस एक ऐसा नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके ऊपर एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट. ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब अगर उनको कंडीशन मिलेगी किसी और की बॉडी पर ग्रो करने की, देन दे विल ग्रो. द नेम वायरस इज वायरस दैट मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड. वायरस का मीन होता है वेनम, मीन्स पॉइजन फ्लूइड given by Pasteur. In addition to protein, viruses also contain genetic material that could be either DNA और RNA. viruses के अंदर जो genetic material होता है प्रोटीन कोटिंग होती है, और प्रोटीन कोटिंग के अलावा viruses में जो genetic material होता है वो होता है DNA और RNA. most of the time it is having RNA as the genetic material. The protein coat is called the capsid, made up of some small subunits called capsomers. जो प्रोटीन कोटिंग होती है वायरसेस के ऊपर उसको हम बोलते हैं व्हाट, कैप्सिड. ठीक है, दैट प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड मतलब आपके जो जेनेटिक मटेरियल है उसको प्रोटेक्ट करती है. दीज कैप्सोमर्स आर अरेंज इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स. वायरसेस कॉज diseases like mumps, smallpox, herpes and influenza. AIDS in humans is also caused by virus. In plants, the symptoms can be mosaic formation, leaf rolling and curling, yellowing and vein clearing, doffing and stunted growth. These are the symptoms that happens in plants if a plant is affected by virus. Next is viroids. Viroids are infectious agent that are smaller than viruses. Viroids जो होते हैं वो भी infectious agent होते हैं लेकिन वो वायरस से छोटे होते हैं. The viroid are found to be a free RNA. वायरॉइड में फ्री RNA प्रेजेंट होता है, कोई प्रोटीन कोड प्रेजेंट नहीं होता है. प्रोटीन कोड सिर्फ वायरसेस में प्रेजेंट होता है. हैंस उनका नाम क्या दिया है, वायरॉइड. मीन्स दे आर
they lacked protein code नहीं होती है. The RNA of the viroid was of low molecular weight. Viroids cause potato spindle tuber disease. Next is lichen. Lichens are symbiotic association or mutual association between algae and fungi. The algal component is called as phycobiont and fungal component is known as mycobiont. They are autotrophic and heterotrophic. ये आपको बताया है. ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, हिट्रोट्रॉफिक भी होते हैं. क्योंकि ऑटोट्रॉफिक इसलिए क्योंकि एल्गे प्रेजेंट है और हिट्रोट्रॉफिक इसलिए क्योंकि फंजाई प्रेजेंट है. एल्गे जो होता है फंजाई को फूड प्रिपेयर करके देता है और फंजाई एल्गे को शेल्टर प्रोवाइड करता है. तो दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं. पार्टनरशिप में फॉर्म होता है लाइकेन. Okay, so close to their association that if one saw a lichen in nature, one could never imagine that two different organisms are present within them. Lichens are very good pollution indicators. They do not grow in polluted areas. Okay student, so here your chapter number 2 is over. I hope you are well understood by this chapter. If any confusion, any query is there, you can write in the comment section. I will resolve your query, and if you are well understood by this video, you can like the video. Thank you so much.